52 years and 6 time only. The world just opened their largest and the biggest oil reserve. Yes, IEA just announced 400 million barrels of oil release. And the reason remains very straight. Strait of Hormuz, where just a ship gets away to a 33-kilometer wide area. तो अभी हम वहाँ चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ, दैट इज 28 फरवरी 2026। अभी क्या हुआ, यूएसए इजराइल दे डिसाइडेड कि हम एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे ईरान पे। क्यों? ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको ईरान का जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटेट है या फिर जो भी न्यूक्लियर प्रोग्रेस हो रही है, दे हैव टू स्लो इट डाउन। नाउ अभी यूएसए इजराइल ने स्ट्राइक करी तो ईरान कुड हैव डन द सेम थिंग, बट नो, ईरान चोज द डिफरेंट वे। It turned towards the world's most important oil choke point, that is the Strait of Hormuz, because he knew कि उस रास्ते से डेली बेसिस पे 20 मिलियन barrels of oil travel करता है daily. This is a daily number. The country clearly said that कि fine, जो भी shipment इस passage से pass करेगी उनको disruptions हो सकती है. As soon as this news came, global markets crash कर गई. Market में tension बढ़ा, and market crash, that how the tension came, and that's how the war actually began. एक्चुअल में वॉर कभी ऑयल के लिए था ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट ये स्ट्रेट ऑफ hormuz इतना मैटर क्यों करता है और ये एक्चुअल में है क्या। देखो, स्ट्रेट ऑफ hormuz एक नैरो वाटरवे है जो कि ईरान के नॉर्थ में और ओमन के साउथ में, इनके बीच में लाई करता है। अब ये इसका जो एक नैरोएस्ट पॉइंट है ना, दैट इज ओनली 33 किलोमीटर वाइड। डिस्पाइट ये इतना छोटा है, इतना छोटा रास्ता है कि 2 शिप जा सकती है उसमें, स्टिल ये इतना इम्पोर्टेंट एनर्जी रूट है on this whole planet, I must say, because as I told you, every day यहाँ से 20 million barrels of oil जाता है, which means roughly 1/5 of world's oil supply इस रूट से हो रहा है। Now, oil exported from the Gulf countries like Saudi, Iraq, UAE, Kuwait, सब यही passage follow करते हैं। Now, because of this, Strait of Hormuz is considered a global energy choke point. अब ईरान ने क्या करा? देखो, ईरान के पास इसका था authority. What Iran did? ईरान प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रूट ओपन है। कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपको बोल्ड ये नहीं कह रही है कि भाई दिस इज क्लोज्ड। नो, दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन। बट why people are saying that this is closed, practically देखा जाए तो why it is closed, because of the three reasons that are there. First, ईरान ने अपने drones को वहां deploy कर दिया। Now this means कि they are targeting the vessels, those which are directly connected to the US or the country who are supporting their rival country. Point 2, उन्होंने नेवल माइंस लगाना शुरू कर दिया है, एंड दिस वाज कंफर्म्ड बाय यूएसए ऑन मार्च 10, 2026, एंड इवन यूएसए ने उनका वो डिस्ट्रॉय भी किया। एंड नंबर थर्ड, दे गिव अ क्लियर वार्निंग। द कंट्री क्लियरली सेड दैट without our permission no oil tanker would pass this passage. And because of all this, these three actions, tanker traffic dropped by 90%. Not because ship can't go, ship can go, but no captain would risk their life. No insurance company would cover their insurance, and no even shipping company would send their ships over there. Now comes कि इससे ऑयल प्राइस कैसे इम्पैक्ट हुए। देखो, ड्रोन्स, माइंस, वार्निंग, इन 3 बड़ी चीजों के बाद विद इन 10 days वर्ल्ड की ऑयल मार्केट क्रैश करी है। एंड आई टेल यू हाउ दिस हैपेंड। देखो, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं। नासिक आपका इंडिया में सबसे बड़ा सप्लायर है फॉर अनियंस, 40% सप्लाई करता है। लेट्स सपोज नासिक में फ्लड आ गई। अगर नासिक में फ्लड आ गई है तो 20% तो वैसे ही कट हो गया। व्हाट इफ यू हैव अ बैकअप विद राजस्थान, बट लोड तो सारा फिर राजस्थान में शिफ्ट हो गया, जो कि नासिक जो 40 देता था अब वो सिर्फ 20 ही दे रहा है। तो टेक्निकली दिल्ली में कभी फ्लड नहीं आई, मेजर अदर सिटीज में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, उनमें कभी फ्लड्स नहीं आई। फ्लड आई सिर्फ नासिक में। अनियन इम्पैक्ट हुआ सिर्फ नासिक का, बट दिल्ली वालों को
भी प्राइस की प्रॉब्लम हुई, and for them also price rised. So this is how the oil works as well. Oil का एक benchmark है. So basically oil prices are varying on the benchmarks. There are typically two benchmarks, but there are third as well for the Gulf country like Dubai. So the two benchmarks are number one, the Brent crude, number two, WTI. So the Brent crude is that benchmark which is mostly followed by the India because it's between the UK and the Norway. It comes from the North Sea. And the WTI is the West Texas benchmark. So that is mostly followed by the US. February 27 को क्या हुआ, वन डे बिफोर द स्ट्राइक, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है बेंचमार्क सेट करने में, उसका it was around $71 per barrel. But March 9, just after 10 days of strikes, it hit $104 per barrel. Now this is nearly 50% of jump just in 10 days. Now today, when I talk about March 12, when I'm recording this video, the Brent is trading around 99 to $101, still nearly 40% above pre-war levels. Now, if you remember this Nasik story that I just told you, Delhi paid more without a single flood. India is paying more without getting involved or without firing a single bullet. Same logic, global market, one price and no escape. Now there must be people coming now, अरे यार रशिया और इंडिया तो दोस्त है, रशिया तो डिस्काउंट पे देता है, तो व्हाई नॉट बाय फ्रॉम रशिया ना. देखो, रशिया भी एक डिस्काउंट मिथ है बहुत बड़ा. So what Russia sells oil to India roughly at $10 to $50, like below Brent price, because उसका लॉजिक क्या है रशिया का, Brent price minus the discount. दिस इज द लॉजिक. सो बिफोर वॉर अगर हमारा ब्रेंट $71 पे था तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली 56 या 61 पे करता होगा. गुड डील. अभी जैसे हमारा वॉर का चला ये सब, ब्रेंट 104 पे गया, इंडिया पे अप्रोक्सीमेटली 89 to 94. नाउ डिस्काउंट इज स्टिल देयर, बट India's bill went to roughly 55 to 60%. Eventually वो ज़्यादा ही है. और what if अगर आप ये डिस्काउंट वाला फैक्टर भी छोड़ दो यार, ठीक है कंट्री पैसा भी दे देगी, बट there are two verified facts for that. One, Russia cannot fully supply India the oil because India imports 85% of crude oil. रशिया इतना satisfy नहीं कर सकता हमारी needs. Why? Because रशिया और कंट्रीज को भी देता है. इट्स नॉट जस्ट इंडिया को वो ऑयल दे रहा है, वो और कंट्रीज को भी दे रहा है. इंडिया नीड्स 4.7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी डे. Second, USA has given India a special waiver to continue buying Russian oil. डील के बाद यूएसए टोल्ड कि भाई नहीं तुम हम वेनेजुला से लो, बट नाउ उन्होंने अभी स्पेशल वेवर दिया है. दिस वेवर एग्जिट. But even with this waiver, the base price explosion still hits India's import bill. रुपीस डेप्रिशिएट करेगा, जो कि हम तो डॉलर्स में ही खरीद रहे हैं ना, रुपी में तो खरीद नहीं रहे हैं. सो रशिया's discount is real, no doubt, but it is relative, not fixed. When global price will export, discount price to exports along with that. Now that is why even with Russia's discounted price, what you quote it as, India still feels the oil crisis. अभी कुछ लोग आके बोलेंगे यार ऑयल तो हम यूएसए से भी बाय कर सकते हैं, व्हाई कांट इंडिया जस्ट गो एंड टेल यूएसए कि भाई तुम ऑयल दे दो. यूएसए तो एट द एंड ऑफ द डे है तो फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, वी कैन बाय. बट देयर इज अ कंस्ट्रेंट टू इट. द वेरी फर्स्ट रीजन, डिस्टेंस. देखो, मिडल ईस्ट से इंडिया का जो डिस्टेंस है वो 7 to 10 days में आपकी शिप इंडिया आ जाएगी अगर मिडल ईस्ट से निकलता है ऑयल. बट अगर यूएसए से ऑयल निकलेगा इंडिया के लिए तो 35 to 45 days तो चाहिए ही चाहिए शिप को. दैट इज 4 times लॉन्गर, और तब तक तो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी. मिडल ईस्ट इज इंडिया का किराना स्टोर अराउंड द कॉर्नर, बट यूएसए इज द मॉल 25 kilometers अवे. सेम प्रोडक्ट बट टाइम एंड कॉस्ट. तो अगेन यूएसए से लेना, और यूएसए का सबसे एक और रीजन आता है उसका शेल ऑयल. उसकी जो ऑयल है ना वो रॉक में, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करना, दैट प्रोसीजर इटसेल्फ टेक अ टाइम. तो वो रास्ता तो हम ले ही नहीं सकते हैं.
So India does buy from USA, but USA cannot replace the Middle East. वो पॉसिबल ही नहीं है. डिस्टेंस है, रिफाइनरी है, कंपैटिबिलिटी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. The closest supplier is always the best supplier in this whole scenario what we have understood till now, especially when there is a crisis. IEA आया. Now IEA is their father. I must say it's an International Energy Agency. So IEA 1973 में इसको बनाया गया था. क्यों? There's a story of that as well. अभी 1973 में चलते हैं. क्या हुआ? अरब कंट्रीज जो थी they were angry because USA and Western Europe ने इजराइल को सपोर्ट करा था वॉर में. Now Arab oil producing countries made one decision: you support Israel, we won't be giving you any more oil. They stopped supplying oil to US and the Western Europe. What happened next? Petrol stations dried out overnight. IEA. And then they decided 1974 में जब ये IEA बना गया, they created one motive that हमारे पास एक बैकअप ऑयल होना चाहिए ताकि कल को कुछ भी इमरजेंसी या क्राइसिस आते हैं हम सपोर्ट कर सके. हेडक्वार्टर इनका पेरिस में है. इंडिया डायरेक्टली मेंबर नहीं है बट काइंड ऑफ एसोसिएटेड मेंबर है. आइए इस सिचुएशन में क्यों आया इज अ कंसर्न. अभी देखो 3 रीजन है इसके. द वेरी फर्स्ट रीजन इज सप्लाई एक्चुअली ड्रॉप्ड. आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये कंफर्म करा है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स ऑफ क्रूड एंड द रिफाइंड प्रोडक्ट्स फेल टू लेस देन 10% ऑफ प्री वॉर लेवल्स. मिडल ईस्ट के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं they started cutting the production because of course without sufficient routes to the market and with no more available storage to them. That's the reason. LNG supply dropped to 20%. IEA again confirmed it. Global liquefied natural gas supply reduced by 20%. Higher income economies in Asia started competing with Europe for the available cargoes. Then comes the reason 3, that is market were panicking as I told you. अभी तक ऑफिशियली ईरान ने डिक्लेयर नहीं करा है कि भाई हमने रूट क्लोज कर दिया, बट मार्केट में पैनिक आया ना, बिकॉज कौन कैप्टन अपने शिप के लोगों को रिस्क में डालेगा यार. तो मार्केट ने पैनिक करा. ब्रेंट क्रूड जो है वो स्पाइक हुआ तुरंत 120 बैरल्स पे, 119 बैरल्स पे. फर्स्ट टाइम अबव $100 सिंस 2022 जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था. तो IEA needs to send a confidence signal immediately. That's why उन्होंने अनाउंस करा कि fine, what we will do on March 11, 2026, they announced that okay, we will release 400 million barrels of oil. Is it enough? 400 million barrels of oil release करके is it enough? Mercury analysis calculated 400 million barrels equally roughly 4 days of global production and 16 days of volume that normally transits through the Gulf. Now, their exact words were, if that does not sound like much, it isn't. Of course, it isn't. And IEA chief himself said that कि जो भी important thing है is to return a stable flow of oil and gas in the resumption of transit through the strait. It's not like we are doing. इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़े टाइम के लिए. मार्केट पैनिक नहीं करेगा, बट क्या ये लाइफ टाइम, क्या ये एक, see it can be a painkiller but it cannot be a cure because the cure has only one name, the Strait of Hormuz. जिस रास्ते से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ फ्यूल हर दिन जाता है, हर दिन, अभी उससे कुछ जा ही नहीं पा रहा है. द लॉजिक इज पेट्रोल के प्राइसेस हाई हैं बट एक्चुअल में हम नहीं पे कर रहे, कोई और पे कर रहा है. हु आर दोज people, those agencies who are paying for us on our behalf? That is इंडिया की 3 मेजर सबसे बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं. दैट इज योर ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, योर भारत पेट्रोलियम एंड योर हिंदुस्तान पेट्रोलियम. They are paying on the behalf of us. They have absorbed the losses when crude prices were high. Now, why government is not telling people about this? देखो, फर्स्ट ऑलरेडी इन्फ्लेशन है इंडिया में एंड इट इज राइजिंग. दे डोंट वांट टू राइज मोर इन्फ्लेशन. According to the data, 3.2%
राइज हुआ था फेब 2026 में फ्रॉम जनवरी जो कि जनवरी का था 2.74%. So a full pass-through of a higher crude cost would quickly feed into the transport fares, food price बढ़ेंगे और cooking gas expenses बढ़ेंगे. ये सब बढ़ जाएगा and eventually it will rise the inflation. And next reason would be government says stock are safe for now, which means India currently has enough crude oil and refined fuel stocks to last about 25 days, and that's why उनको नहीं rise करना. And this is the news as per the verified March 12, 2026. At the end, it's just like, okay, this is the story of oil war and India. If this is helpful and you understood, because you must see this is my very first story that is coming on this YouTube channel. So share it with the people you want that they should know, because of course पता तो सबको होना चाहिए ना यार चल क्या रहा है. तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं और वीडियोस ऐसी बना सकूं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस. एंड या सीखो और सिखाओ.